अपने नेक्स्ट पैनल डिस्कशन की साइड पे मूव करते हैं और हमारे पास पैनल में आज जो अवेलेबल हैं वो हैं गियास खान, जो पहले पैनल में हमारे साथ होंगे. गियास खान इज प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इनका एक और बहुत बड़ा तारुफ है, इज लीडिंग एंग्रो राइट नाउ. लेकिन आज जो वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ OICCI ज्वाइन कर रहे हैं. और इसी पैनल में हमारे साथ एक डिस्कशन के लिए अवेलेबल होंगे मोहम्मद औरंगजेब, हु इज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एंड आल्सो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन. सो यहाँ पे हम आज इनसे डिस्कस करेंगे कि OICCI का पर्सपेक्टिव क्या है अराउंड द कॉन्फिडेंस, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमी, और वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारे साथ. और शुरू करेंगे हम गियास साहब के साथ और फिर फॉलो करेंगे हम औरंगजेब साहब को, और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे कुछ 10 मिनट का एक ओवरऑल ओवरव्यू देंगे गियास साहब, और उसके बाद 10 मिनट्स का एक ओवरव्यू देंगे औरंगजेब साहब, और देन वी विल गेट इनटू द क्वेश्चन आंसर सेशन. सो वेलकम टू टुडेज सेशन गियास साहब एंड औरंगजेब साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड सलाम टू एवरीवन. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप for holding this particular event, and I want to thank you, Sajjeed, for your introduction. And as we've spoken about, as Finance Minister has spoken about it in quite a bit of detail, that the boom bust cycles that Pakistan goes through every few years is not something which is uncommon. But I think it's also important to realize at this stage that the particular crisis we are facing right now is fundamentally different and far more serious. We're currently living in a world which is recovering from the pandemic and is going through a massive inflationary cycle. And this inflation has essentially been induced by the fiscal stimuli that has been given by various governments to kickstart their economies during the pandemic. The supply chain challenges that have been faced once the aggregate demand picked up, and then most recently the Ukraine and Russia war, when we talk of the commodity price increases that have happened mostly on the energy and food side. Now that is the global theater in which our local economic and political crisis is being played out. And just to kickstart the discussion, while the challenges were very well articulated by our finance minister, I want to just touch upon some of the major shifts that are happening globally, and what kind of risks do they pose to the economy of Pakistan, and then of course what are some of the opportunities that come out of it. The number one shift, of course, is the growing focus towards food security. Now, if you look at some of the studies that have been carried out by the UN, the food demand is going to double by 2050. There were approximately 800 million people who were undernourished in 2020, and this number is likely to grow. And if you take into account the Russian-Ukrainian war, and if I was to pick on wheat, Russia and Ukraine together supply approximately 20% of the world's wheat. If you now look at the local Pakistani dynamic, our population is due to increase or double rather by 2050. And the biggest risk, or the two risks that we face, number one is food insecurity. As the finance minister pointed out, that since 2020, Pakistan has been a net importer of wheat. We started with 3.7 million tons of wheat import in 2017, and this year, as he mentioned, it's going to be around 3 million odd tons. And if we're not able to increase our yields, then certainly this wheat will need to be imported, and that will further exacerbate our balance of payment situation. So the opportunity in all of this is very clear. For a country like Pakistan, where our yields are 30 to 40% worse than some of the other leading countries, there is a huge room for improvement. And if we're able to bring about these improvements, then not only are we going to not require to import wheat and food products going forward, but this could potentially become a source of export for us. And I want to give credit to a lot of organizations here, and since Aurangzeb Saab is here, I do want to mention that Habib Bank is also playing a big role, because
financial inclusion of the farming community is perhaps the major bottleneck in helping Pakistan unlock the potential of our agriculture sector. The second shift, which is happening globally, is on the energy side. And as you know, that Russia is one of the largest exporters of gas, and we've seen how the oil prices and the gas prices have reacted to after the war. Looking at the local dynamic, as far as our own uh, gas usage is concerned, 70% of it is the portion of gas which is provided by our local resources, and 30% is imported. By 2030, this ratio will flip, which means that 70% gas will need to be imported and 30% will come from local resources, because obviously our gas reserves are also depleting. And we know that energy is probably the largest component as far as our imports are concerned. So the risk is very clear. And I think it has played out in front of our eyes over the last 3 months, where oil prices and gas prices have gone up. We've been taking a hit of about 120 billion rupees on a monthly basis. And of course, everyone is hesitating to pass this down. And that's because in terms of energy, we are just heavily reliant on imports. So what's the opportunity in all of this? And the opportunity is very clear and in front of us. We need to maximize our indigenous resources. And here, Thar is one example which I would like to give. And just on very, very recent numbers, if we were to look at the cost of power which is being produced, currently a per kilowatt cost of electricity produced through LNG costs around 27 rupees. If it's imported coal on current prices, that's well over 35 rupees. And on indigenous coal, it's around 13.4 rupees. And this is the price which the Thar coal will reach once phase 3 of Thar coal comes into play, which will be in the next year or so. What this shows you is that we do have the resources which can help us mitigate some of the risks that we are facing currently because of energy imports and all the vulnerability that has been caused because of the war. The third shift that I want to talk about is the accelerating shift in technology. Globally, we've seen that whether it's AI, 3D printing, blockchain, metaverse, IoT, the success of technology companies themselves on how they're valued and how the top 5 companies now include mostly technology companies just shows us of the major shift that is happening towards technology. In terms of local dynamics, now we have over 120 million people who've got access to mobile phones. We've seen how the tech startup, how encouraging the numbers have been, where $350 million of investment have flowed into this area. We've seen how SaaS program has been able to work. So instead of really talking about any risks over here, I think there are only opportunities for us, because usage of data is only going to grow over the next 10 years. And it really comes down to how we can help educate people, how we can help educate farmers, and can we use technology as a medium to take care of some of the challenges that we've not been able to take care of earlier. The fourth shift that, of course, is happening is towards ESG. And as we know that there are so many countries, 130 plus countries who represent about 80% of the world economies, have actually signed up for net zero by 2050. Our own government has committed to a 60% contribution from renewable energy as far as power is concerned, and 30% presence of 30% of electronic vehicles. The risk, of course, in this shift for us is that if we are to play a bigger role in the global marketplace, if we are to increase our exports, then we must realize that our customers, particularly in developed countries, have now become more mindful of ESG standards. Not only is it our moral responsibility, but now this has become an economic imperative. The opportunities, of course, for companies like ours, and happy to see that a lot of the
textile exporters have made these pledges that that new opportunities will come up, and if our manufacturers are adhere to these conditions, then market access for them in developed countries will become possible. We know what challenges we are facing. I think there's no point repeating the challenges, because whether it's on the export side, whether it's on the tax collection side, whether it's as the finance minister said, on the productivity side, whether it's our inefficient SOEs or our inefficient fuel mix, inefficiencies in our overall value chain. I think as a country, we need to figure out how we can match some of the global shifts that are taking place, what are some of the opportunities that are being created, and then look to address some of the challenges that we have. And I just want to mention a few that, of course, are very possible and in front of us. Number one, of course, is the advantage of technology. Presence of NADRA, success of the SARS program, and several other initiatives clearly show us that we can document the economy. Not only is it going to help us increase our tax to GDP, which currently stands at around 11%, and that just won't cut it. India is going close to 21%, and we are still below 11. Not only is it going to help us in bringing people into the tax net, but something that the finance minister spoke about, direct subsidies. Rather than providing fuel subsidies to people like us, technology is going to make it possible for the government to provide these subsidies to people who really deserve it. And then, of course, financial inclusion. So the number one challenge that probably stands between us and higher agriculture productivity is the ease and the access of the right kind of financing to farmers. And with the development of technology, with so many fintechs coming in, with digital banking, and the fact that people now have access to broadband on their phones, will make it possible for them to get trained and then for them to get access to markets which they previously didn't have. We have to look at ESG as an opportunity, whether it's for the textile sector, for chemical sector, for recycled plastics. There are several other opportunities that are present. We need to, of course, encourage investment in productive sectors and not in real estate. And I think that's a point, again, that was mentioned by the finance minister, that there has to be a push from our side to make investors invest more in manufacturing, in agriculture, in real businesses, as opposed to real estate. And last but not the least, please. Last but not the least, it's on upskilling of our labor force. Yes. With such a large portion of our country being young, and the fact that there is tremendous opportunity in the technology sector and technology exports, upskilling of the labor force is of great importance. So thank you very much, Sajjeed, for the opportunity, and to the Corporate Pakistan Group. Thank you, Ghias. But stay with us. We have got some questions very specifically for the conversation you picked up. There are people who are recognizing the opportunities and risk, and वो चाह रहे हैं कि इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा expand करें इस conversation को, और हमारे पास अभी question answer session में थोड़ी सी opportunity आएगी. So now I would like to invite, and I'm honored to invite Aurangzeb Saab, who is chairman of PBC and PBA, and he's also leading HPL. Like Ghias mentioned, agriculture के हवाले से भी औरंगजेब साहब हम आपसे थोड़ी देर में हम आपसे उस पे प्रोडक्टिविटी और HPL का जो इनिशिएटिव है उस पर थोड़ी सी एक्सपेंशन चाहेंगे गुफ्तगू के हवाले से. Over to you, Aurangzeb sir. Ji, thank you, Sajjeed, and again, greatly appreciate the invite from Nutshell and Corporate Pakistan Group. I think Ghias has done a fantastic job in setting up the sort of the global imperatives around agri, energy, tech, ESG. लेकिन coming to Pakistan, देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा और अभी Ghias ने भी जिक्र किया, there is no dearth of policy prescriptions in the country. It's all about timely decisions and timely execution. हम जो अपने छोटे-छोटे corporate groups चलाते हैं या companies चलाते हैं, वो हमें मालूम है कि ये जो timeliness of the whole thing, how critical that is. Because अगर आप देखें from various administrations, Economic Advisory Council after Economic Advisory Council, in terms of the what and the why, we are all very clear in terms of roadmap for inclusive and sustainable growth. हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से हम बात करते आए हैं
about arresting the premature industrialization that has happened in this country, and therefore जो हमारा mantra है in terms of make in Pakistan and sort of the focus on exports. लेकिन मैं सिर्फ दो तीन चीजों पे फोकस करना चाहता हूं because there's a whole laundry list, right, of short term, medium term, long term things that we need to do in the country. लेकिन the highest value imperatives जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, Ghias ने जिक्र किया around the tech stack, if you want to call it that, और इंडिया का भी जिक्र किया. देखिए, India is going to grow at 8% this year, और अगर हम देखें कि जो 4 पिलर्स हैं जिसकी वजह से इनकी ये ग्रोथ जा रही है, और ये the country, India is moving towards a $5 trillion economy by 2027. Out of those 4 pillars, 2 are dependent on their preeminence in IT, और जो अभी बिस्प की और एहसास की बात की गई कि जो डिजिटल वेलफेयर सिस्टम है वहाँ का, तो जो उनकी आईटी इंडस्ट्री है, वी ऑल नो अबाउट इट, $230 billion in terms of annual revenues, which means कि उनकी जो export of services है, just based on IT, they are 5th in the world, whereas on the goods side they are 16th in the world, which means जब हम पाकिस्तान में diversification of export की बात करते हैं, we have to go beyond textiles. And there are things, I'm just coming back from a freelancer conference, we have all the bells and whistles जो अभी Ghias ने भी जिक्र किया है उसका, कि जो हमारी डिजिटल इनेबलमेंट है, जो वहाँ आधार कार्ड था, यहाँ जो नादरा की जो सारी सिचुएशन है, जो बिस्प का जो सारी पाइप्स बिछ चुकी हुई हैं, so we have all the building blocks in place कि हम इस जर्नी को एक्सेलरेट कर सकें. The second thing I do want to mention is CPEC. कि देखिए, phase 1 was all about infrastructure, phase 2 is operationalizing and making sure we get actually the best out of it through industrialization, through export processing zones, ताकि हम उस infrastructure को monetize कर सकें. That is again an opportunity जिस पे हम a lot of time, effort and money has been spent, and we should now be trying to monetize that through the export processing zones. एक और मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जो हमारी digitalization of the economy है, again it's back to tech, but I'll just leave you with a data point कि पिछले साल में, और ये स्टेट बैंक की फिगर है, कि the cash in circulation in our economy has gone up by 1.1 trillion, and the total deposit in the banking system has gone up by 250 billion. So इस वक्त जो CIC over the money supply है is at an all-time high of 31%. अब इंडिया से कंपेयर करें तो that's 13%. हम अगर उस 31% को 25% पे भी ले आए, तो the amount of cash that can be pumped into the economy into more productive uses, and I think to a certain extent Ghias also mentioned that, and Dr. Miftah also referred to that, कि real estate से निकल कर we move towards more productive use of the cash. And then there are a number of things that we can focus on, including the focus on SME. But in the interest of time, मैं दो और बड़ी I just want to mention 2 very quick things. एक तो reiterating this charter of economy, right, with cross-party consensus, that is absolutely essential, because ultimately जब हम business confidence की बात करते हैं, तो इस पॉलिसी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, जनरली जो बिजनेसेस हैं वो जो वूका का एक कॉन्सेप्ट है कि things are going to be volatile, things are going to be uncertain, complex and ambiguous environment. हम मुल्क के खुदादाद हैं, हम सब लोग actually we adjust the political volatility very quickly. लेकिन ये जो पॉलिसी consistency and continuity है, that will only come through charter of economy. And that's very critical. And the last thing I just want to mention is कि देखिए, short term, medium term, long term चीजें तो हम कर रहे हैं. The immediate imperative was जो हमने कल भी देखा है, is restoring the fiscal prudence. So उसमें जो अभी subsidies की बात आई है, I think that's a very welcome step which has been taken, and we move towards the revival of the IMF program, because that is going to be absolutely critical from a balance of payment perspective. ये चीज करनी बहुत जरूरी है
क्योंकि उसके बगैर द रेस्ट विल नॉट फॉलो। थैंक यू। थैंक यू औरंगजेब साहब। आई थिंक मैं आपके लास्ट पॉइंट से I'll pick it up that जो अभी आपने बात की कि IMF की एक सपोर्ट हमें चाहिए, आज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और nobody can deny that given the current situation। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक मिफ्ता साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि हमारी जो ओवरऑल बिजनेसेस हैं, अनलेस अंटिल दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्टफ फॉर एक्सपोर्ट, और हम अपनी एक्सपोर्ट को एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं लेके जाते, 60 बिलियन 100 बिलियन डॉलर तक नहीं लेके जाते, सो ये IMF की जो रीपेमेंट्स हैं ये भी सस्टेनेबल नहीं रहती। सो आप दोनों इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेसेस की साइड पे, सो क्या वजह है कि हम अपनी इंडस्ट्री साइड पे अगर हम देखें तो हमें वो एक्सपोर्ट का की ग्रोथ नजर नहीं आती ओवरऑल। अगर हम इस वक्त सिर्फ IT को नहीं बात कर रहे, IT पे मैं वापस आता हूं, हम वी विल टॉक अबाउट दैट IT एंड लेकिन अगर हम प्रोडक्ट और गुड्स की बात करें तो हमें वो एक्सपोर्ट नजर नहीं आ रही, और एक्सपोर्ट में उस तरह के ट्रेंड्स नजर नहीं आ रहे जहां पे पाकिस्तान सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर रहा हो। सो स्टार्टिंग विद यू औरंगजेब साहब, व्हाट्स स्टॉपिंग अस टू क्रिएट प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्टेबल हो और नई एक्सपोर्ट मार्केट्स बना रहे हो या मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो, क्या चीज हमें रोक रही है इस वक्त इसमें? देखिए, I'll just take a quick stab at it and then of course Ghias can come in। देखिए, पहली बात तो ये चीज है कि it starts with acknowledgement, and we have to acknowledge that the overall productivity of the industry needs to improve to match the regional peers, right? And इसमें दोनों concerted effort चाहिए होगी, both by business and the government, और इसमें education है, technical training है। दूसरी चीज इसमें obviously regionally competitive energy है, जो अगर हम IT को भी छोड़ दें तो देखिए जो हमारा सारा फोकस है ऑन टेक्सटाइल्स, एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक बिकॉज इस साल इंशाल्लाह हम $30 बिलियन टच कर जाएंगे इन द एक्सपोर्ट बेस। लेकिन लुक एट ऑल अदर थिंग्स व्हिच वी कैन डू, फार्मा, हॉर्टिकल्चर, मीट, फिशरीज, फर्नीचर, केबल्स, लाइट इंजीनियरिंग। आई थिंक ये तीसरी चीज मैं कहूँगा कि ये हमें बहुत इसकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है। एंड द लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन इज जस्ट नेगोशिएट बेटर मार्केट एक्सेस फॉर पाकिस्तान। देखिए, आपने अभी वियतनाम की एग्जांपल दी है, तो अगर सिर्फ वियतनाम को मैं देखूं तो जो उनकी एज दे आर मेंबर ऑफ आसियान ऑब्वियसली, लेकिन उनकी ट्रेड एग्रीमेंट्स किन किन के साथ हैं? चाइना, कोरिया, ताइवान, USEC, UK, रशिया, एंड वी जस्ट नीड टू डू ए मच बेटर डील इन नेगोशिएटिंग दैट एक्सेस। इवन अगर मैं वियतनाम का, चाइना को हम कहते हैं कि आर इज इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, बट इवन इन टर्म्स ऑफ जो बांग्लादेश का उनका एक्सेस है थ्रू द FTA इज मच बेटर देन इन पाकिस्तान। सो आई वुड से कि ये 3-4 चीजें हैं व्हिच आई डू थिंक वी नीड टू फोकस ऑन टू गेट दिस 30 बिलियन टू 40 and 50 billion, even if we leave the IT part aside। थैंक यू औरंगजेब। Ghias sir, so आपके क्या, what's stopping us from, like इन्होंने औरंगजेब साहब ने एक लिस्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात की जहां पे हमारे पास एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, बट वी आर नॉट सीइंग दैट एक्सपोर्ट। हमारी रिलायंस टेक्सटाइल पे बहुत ज्यादा है और टेक्सटाइल पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। अभी भी हमारा मार्केट शेयर इज नेक्स्ट टू नथिंग, इट्स वेरी नेग्लिजिबल इन द ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। सो बाकी एरियाज में हम क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पाते? इट्स अ विजन, इट्स अ मार्केट एक्सेस, इट्स अ लेबर प्रोडक्टिविटी। आपके ख्याल में क्या चीज रोक रही है हमें? देखिए सजीद साहब, एक तो टेक्सटाइल की सबसे पहली बात ये कि टेक्सटाइल का दुनिया भर में जो मार्केट है ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारे इंपेरेटिव्स हैं, इवन सस्टेनेबिलिटी इंपेरेटिव्स हैं, जिसकी वजह से और हमें बियॉन्ड टेक्सटाइल्स देखना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने कंपैरेटिव एडवांटेजेस देखने चाहिए ना, एज अ कंट्री। व्हाट आर आवर कंपैरेटिव एडवांटेजेस? पहला हमारा है अबंडेंट चीप लेबर। दूसरा, we have a very strong agri base. Teesra, we've got natural resource availability, minerals. We've got availability of, we've got very high potential for solar and wind power. Then of course it's our geostrategic location. So अगर इस पे बात की जाए तो जो कुछ सेक्टर्स पाकिस्तान को फॉरेन फोकस करने चाहिए फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, उनमें सबसे पहले है टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और हमने अच्छी कंपनियों का एग्जाम्पल देखा है। सिस्टम्स का आप एग्जांपल देखें, $100 बिलियन का माशाल्लाह उनका मार्केट कैप हो गया है। अगर हम लोगों को ट्रेन करें और इस तरफ जाएं तो जो आपके मुल्क की इस वक्त डिवैल्यूएशन हुई है, आपका वर्कफोर्स इस वक्त बहुत कंपैरेटिव है।
दूसरा एरिया जहां हमें फोकस करना चाहिए, जो कि शायद इक्वली इंपॉर्टेंट देन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इज एग्री एक्सपोर्ट्स। Yep. आपने, पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद दीज रिसोर्सेज। अगर हम एग्री में जाके सही क्रॉप सिलेक्शन फार्मर्स के साथ मिलके करें, उनको फाइनेंसिंग सही रेट्स पे दें, उनकी फार्मिंग टेक्निक्स को बेहतर करें, मैकेनाइजेशन लाएं, फार्म टू मार्केट लॉजिस्टिक्स ठीक करें, तो बहुत पाकिस्तान का एग्री एक्सपोर्ट्स में पोटेंशियल है। और तीसरा इज मिनरल माइनिंग। हमारे पास गोल्ड के, कॉपर के और बुतेरे मेटल्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें ये करने चाहिए। चाहिए क्या चीज? एक बात जो औरंगजेब ने की है वो बिल्कुल ठीक है, मार्केट एक्सेस। अगर हम दुनिया भर में जाके कमिट करते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे 60% 2030 तक, तो ये वो मौके होते हैं जहां पे आप मार्केट एक्सेस नेगोशिएट करें। आप हमें सिर्फ पैसे मांगने से बेहतर है कि हम मार्केट एक्सेस को मुल्कों से मार्केट एक्सेस दें और फिर उनके साथ बिजनेस करें। एक तो ये बहुत जरूरी चीज। दूसरी जो चीज जरूरी है जिसकी वजह से चीजें अक्सर रुक जाती हैं सजीद, वो है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग। Policy. जब तक आपके पास कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो पैसा इन्वेस्ट करते हुए कतराएगा। तो और फिर जब बात आती है तीसरी, विच इज द टारगेटेड सब्सिडी। जिस तरह हम टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडाइज करते आ रहे हैं, हमें कुछ इन नए सेक्टर्स को शुरू में मीडियम टर्म में मदद करनी होगी, उनको कुछ टारगेटेड सब्सिडीज देनी होंगी। तो ये चीजें अगर हम करें तो पाकिस्तान का माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है इन एरियाज में, और हमें जरूर इसको देखना चाहिए। थैंक यू Ghias साहब। आई थिंक आई जस्ट बिल्ड अपॉन दैट। आप दोनों ने एक चीज पिक की थी, बल्कि दो चीजें पिक हुई हैं, एंड मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस पॉइंट भी दे दूं। अगर हम वियतनाम, साउथ कोरिया और अगर हम इवन चाइना को हम देखें, तो उन्होंने दो चीजें जो है फंडामेंटल प्रिंसिपली इन तमाम कंट्रीज ने लेके चले थे, इवन ताइवान फॉर दैट मैटर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। अनफॉर्चुनेटली वी डू हैव चीप लेबर, लाइक अगर हम उसको प्राइस आर्बिट्राज की बात करें, लेकिन जब हम उसको प्रोडक्टिविटी मैयर पे एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो वहां पे हमारे लिए सर्टन चैलेंजेस आते हैं कि वहां पे क्वालिटी से लेके और आउटपुट की प्रोडक्टिविटी में वी आर नॉट कंपेटिटिव कंपेयर टू चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका फॉर दैट मैटर इन मोस्ट ऑफ द एरिया। कुछ एरियाज में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है रिसेंटली, एंड दोज आर द अपॉर्चुनिटी एरिया, जैसे आईटी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वहां पे भी हमारे पास, जिस तरह अभी आपने बात की, वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट साइड ऑफ इट। तो अगर हम ये आईटी की साइड पे आते हैं, एंड द बिजनेसेस फील कि यहाँ पे हमें एक ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है, इसमें बच्चों को हमने इंटर्नशिप्स देनी है, तो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट्स के रोल से ज्यादा बड़े बिजनेसेस की एक विजन चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी साइड पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, और उसके लिए वो उस तरह का रिसोर्स बिल्ड करें और उस रिसोर्स की बेस पे ब्रांड बिल्ड करें। सो आप दोनों एक फंडामेंटली पाकिस्तान के सबसे ह्यूज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ पीबीसी, एज अ पीबीए, एज अ OICCI. Do you think these organizations are divesting or creating a new investment opportunity for themselves in technology side? क्या हमें नई आईटी कंपनीज बनती नजर आ रही हैं जो इनको ट्रेन भी करें और इनको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की साइड पे लेके जाए? आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, इंडिया भी जो है वो 230 बिलियन कर रहा है, फिलीपीन सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर में 30 बिलियन क्रॉस कर गया हुआ है इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। डू यू सी दीज बिग ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिंग इन दैट स्पेस नाउ? देखिए, I'll take a quick stab at it and then turn it over to Ghias. कि पहली बात तो ये है कि जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि in the last 12 to 18 months we have seen a lot of VC investment coming into the startup in Pakistan. As HPL ourselves, we have set up a VC fund, और हमने पहली जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो फिंजा में की है, और वो फिंजा में इसलिए की है बिकॉज दे एक्चुअली गो एंड डू फाइनेंसिंग फॉर द करियाना स्टोर्स, जिसमें अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं आई थी। तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं इन वन फॉर्म शेप और द अदर लार्जर कंपनीज आर गोइंग इन एंड sort of investing in some of these startups and providing that enabling environment for the startups as well. लेकिन दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, ये जो आपने अभी यूथ की बल्ज की बात की है पाकिस्तान में, which is a real opportunity
is 60% of our 221 million population is in that youth category. Rather than leaving it to the policy makers कि कितनी नौकरियां आ रही हैं, कितनी नौकरियां जा रही हैं, ये जो फ्रीलांसर जो इस वक्त जा रहे हैं in terms of youth entrepreneurs, उनके लिए हम क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अगर हम देखें पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन, वो कहते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख फ्रीलांसर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 2 मिलियन प्लस फ्रीलांसर्स आर लर्किंग अराउंड इन पाकिस्तान. अब उनको हर जो पाकिस्तानी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, उनको इनेबल करें. जो बैंकिंग सेक्टर है उनके लिए फास्टर, चीपर, मोर एफिशिएंट सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें. इवन इफ दे आर मेकिंग $100 per month or $200 per month, this all going to add up. So I think this is a big upside which is there for Pakistan. I have a few other thoughts, but in the interest of time, I just wanted to leave it for some time for Ghias as well. Yes. No problem. Sajjeed, there are lots of initiatives being taken, as Aurangzeb also mentioned. But the answer to your question, that are the big investors, the big groups, are they doing enough or investing enough in technology as businesses? The answer, sadly, is no. And I think that there is a lot of room for growth. And I think that will only happen only when they're going to see success of companies, but also when you're going to remove other rent-seeking opportunities from the economy. When there are several opportunities, when there are going to be so many opportunities for investors and businesses to invest in and make outsized returns without putting as much at risk, then you're not going to see money flow into riskier investments like technology, even though they may have a big potential. So we have to create the right market conditions. We can't force people to invest in areas. Investors are very smart, they're very savvy. They will come and invest in technology when you build the right conditionalities around it and you remove opportunities of seeking rent, as we have over many decades in our country. Now, thank you. Ghias, I think that's a very relevant point. Investment seek returns, and that's this fundamental principle. जहाँ पे return ज़्यादा मिलेगा, अगर वो आज rent seeking attitude में, real estate में, currency, quick trading में मिल रहा है, तो the people will start mobilizing that one. Just charter of economy की जो अभी बात की finance minister ने भी और आप लोगों ने भी, I think charter of economy की आज अगर हम बात करेंगे और जहाँ पे हम political governments और political parties की consensus की बात करते हैं as a bare minimum, where the business has to also step up and become a part of that charter of economy, because बहुत सी commitment businesses की side से भी आनी है कि वो अपने standards improve करेंगे export के लिए, वो technology side पे invest करेंगे, उसमें फिर government ने जो support लेनी है, then you can go there as well. So I think it's not a one-sided thing जिसको charter of economy की हम बात करें, businesses की side से वो commitment और investment और वो a little bit risk appetite and confidence जरूरी है कि उनका भी जिन areas में believe है वहाँ पे उनकी investments भी होनी चाहिए. I think just in interest of time, I'll just try to summarize it. Anything you want to add, Ghias Saab or Aurangzeb Saab, in a minute? सिर्फ एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ सजीद, as a reaction to जो अभी Ghias ने बात की है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि we're all driven by return on investment and return on equity. But I do genuinely believe that the responsible organizations in Pakistan, they do need to invest in capacity building. Yes. और हमें बढ़कर, and we will have to step up in interventions, whether those are interventions on the agriculture side, whether those are interventions on the infrastructure side, whether interventions on the IT side, which means we'll have to put our neck on the line, which means we'll have to get out of our comfort zones. और यही आपके उस सवाल का जवाब भी है कि जब हम गवर्नमेंट से इतनी चीजें मांग रहे हैं, so then we also need to step up, need to commit, right? As big organizations, small organizations, SMEs. That's the only last thing I just want to mention. Thank you. Any final comment from your side, Ghias? Otherwise, I'll summarize it. No, I think go ahead, Sajjeed. I think Aurangzeb has covered it well, so please go ahead. Thank you.
I think just going back to fundamental, अभी हम फाइनेंस मिनिस्टर की जो गुफ्तगू थी और गियास साहब और औरंगजेब साहब ने भी उसको फर्दर एलेबोरेट किया. So we have to go back to the fundamental. जिस तरह गियास साहब ने भी शिफ्ट्स की बात की, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, labor productivity, which has to come through the capacity building, the large organizations. The charter of economy is not only for political parties. The businesses have to step up and they have to put the skin in the game. और उनकी साइड से भी वो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आनी चाहिए जिनको आज हम अपॉर्चुनिटीज गिन रहे हैं. और उसमें रेंट सीकिंग जो एटीट्यूड है उसको डिस्करेज भी करना है और वो अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज के थ्रू रिमूव भी करने की बात हो रही है. Technology is the biggest benefit which we can see there. ESG is the next big opportunity for us, जिसमें हमें एक successive और progressive way से नहीं चलना. हम we can have a literally we can step up our game just by complying with the ESG के जो standards हैं या sustainability और climate action की जो commitments हैं, और उन्हीं को use करते हुए, सिर्फ इस commitment को use करते हुए कि हम एक ESG compliant society और businesses develop कर रहे हैं, हम मार्केट एक्सेस के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट भी कर सकते हैं. और टेक्नोलॉजी विल आल्सो हेल्प अस टू इंप्लीमेंट दैट ESG, एंड टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प अस टू इंप्लीमेंट दीज ESG रिलेटेड इनिशिएटिव आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल. सो अगर हम यहाँ पे वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो दैट्स नॉट ओनली फॉर आवर ओन बिजनेसेस, हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की एक नई अपॉर्चुनिटी भी वहां पे क्रिएट होती है. सो औरंगजेब साहब एंड गियास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. I think I have thoroughly enjoyed, और मेरा ख्याल है ऑडियंस की साइड से भी जिस तरह के कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं वो बहुत इस कैंडिड कन्वर्सेशन को उन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. सो थैंक यू फॉर योर कैंडिड कन्वर्सेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू.